Hello, children. Christ Church Convent Higher Secondary School, Gadawara welcomes you to digital classes. I am Amit Toshniwal. This video is for class 12th, subject accountancy, chapter number 6, dissolution of partnership form, part 1. Dissolution means to get over, or you can say game over. In simple word, you can say closing of business. Business is closed down. It means end of partnership and end of firm. To understand the concept of dissolution in relation to a partnership, we will have to understand these two meanings. First, dissolution of partnership, and second, dissolution of partnership firm. At its initial stage, you learnt that partnership arises due to agreement, and that agreement may be verbal or written. So this is voluntarily, it means optional, not compulsorily. So that agreement only binds all the partners in a relationship, and that relationship is called partnership. So it is reconstituted also, as you see, at the time of admission, profit sharing ratio change hone par, retirement, death, etc. So it is reconstitution. So when that reconstitution takes place, so that is only the dissolution of partnership. Why? Because the agreement among the partners is dissolved when a new partner enters the firm or leaves the firm or dies. So new agreement is made. So that is why old partnership agreement having no effect for the further transaction, and it is invalid. Therefore, at the time of reconstitution, partnership dissolves, but business continues. It goes on in continuation. It means firm is not closed down. Only partnership ends and new partnership is formed. New partnership is formed means new agreement is made. But at the time of dissolution of firm is closed down and business comes to an end. It means no further business or no transaction by the firm will be done in future. So this is a wider term actually. And how it happens? When the partners are not agreed to continue the business in future, so that firm is dissolved. So the relationship between among the partners is also dissolves. So end of partnership firm means end of partnership relation also. But end of partnership
only does not mean the end of firm or dissolution of partnership firm. I mean to say, dissolution of partnership firm is a wider term, whereas dissolution of partnership takes place in firm on accrual basis, and dissolution of firm is full and final. Hereafter, firm is not in the state to run business, to continue business, and partners are separated, firm is closed down. Okay? So you can have a glance difference between dissolution and dissolution of firm and dissolution of partnership. So first is, all partners cease to be partners in case of dissolution of firm, whereas in case of dissolution of partnership, they don't cease to be partners. Some still continue to be partner, and any new partner may join. Second is, what is the effect on business? That effect is, in case of dissolution of firm closes down, the business is discontinued, where in dissolution of partnership, firm continues to do business. Third is, if dissolution of firm is there, then necessarily dissolution of partnership happens. But in case of dissolution of partnership, firm is not dissoluted. And what is the accounting effect? At time of dissolution, realization account is prepared, whereas as time of dissolution of partnership, revaluation account is made. Revaluation, and here realization. What is a realization account? We shall discuss in next video. Here, all the accounts of firm are prepared finally and closed. All the assets are sold and liabilities are paid off. But at the time of dissolution, there is no need to sell assets and to pay off all the liabilities at that time only. They can be, means liabilities can be carried over, matlab carried forward, and assets too. So their business follows the principle of going concern in case of dissolution of partnership. What are the causes of dissolution of firm? They are due to agreement by the partners, or by the compulsion or the order of court. And dissolution of partnership having 5 reasons you studied in chapter number 4. रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले जो 5 कंडीशंस हैं वो इसमें आ जाएंगी. ठीक है. नाउ यू सी द मेथड्स और टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. किन कंडीशन में फर्म को बंद करना पड़ सकता है या बंद हो सकती है. पहली कंडीशन है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है. तो पहली स्थिति हो सकती है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. सारे पार्टनर्स इस बात की सहमति दे दें, वो कंसेंट कर लें कि बिज़नेस बंद करना है, अलग अलग, अब बिज़नेस नहीं चलाना. तो आप आपसी सहमति से कर सकते हैं, एग्रीमेंट से. दूसरा हो जाएगा जब कोर्ट नहीं कर रहा है तब कंपल्सरी डिसोल्यूशन का 2 स्थितियां हैं. पहला है इंसॉल्वेंसी. When all the partners or except one partner are declared insolvent, then the firm is compulsorily dissolved. Insolvent means they are incapable to pay off liabilities of the business. And second, illegal business.
If any firm's business is declared illegal due to any reason, then firm will dissolve compulsorily. Okay? But if any of the partners is doing illegal business, or any of the firm, suppose firm is carrying many of the businesses, and one of the businesses is declared illegal, then only that firm will be dissoluted, but other businesses will go on. उस समय बाकी ऐसा नहीं होगा. ठीक है. थर्ड है डिसोल्यूशन ऑन कंटिजेंसीज. यदि कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रही है, इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्ररी मीन्स समथिंग ऑपोजिट, तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है. पहला रीज़न है डेथ ऑफ अ पार्टनर. यदि कोई पार्टनर मर जा रहा है तब. सेकंड है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, जो अपन पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, इंसॉल्वेंसी कंपलसरी में. या एक्सपायरी ऑफ द पीरियड. एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मीन्स इट वॉज पार्टनरशिप, firm was made for a particular period and that time is over. Except this, fulfillment of object. If any firm is established for a purpose and that purpose is over, then firm is completed over after the completion of its objectives. And next है resignation of a partner. If any partner resigns from the firm, then partnership may be treated as dissolved. फोर्थ है इसका dissolution by notice. So it can be dissolved giving notice to each other, and firm will be treated as dissolved on the date of serving the notice. But if the notice contains a date, then the firm is treated as dissolved on the date of notice. It is called dissolution of will. नोटिस भी दे सकते हैं एक दूसरे को, और नोटिस दे के बंद कर सकते हैं. तो ये तो वही बात हो गई है कि वो एग्रीमेंट के थ्रू कर रहे हैं. तो एग्रीमेंट में सहमति बैठ के कर ली और नोटिस में एक दूसरे को लेटर लिख के दे दिया. इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, है ना. Now the second one is most important and it comes in your board examination. Dissolution by the order of court. ये पेपर में आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है. तो कोर्ट कब कब कर सकती है? पहला रीज़न हो सकता है इफ़ पार्टनर इज ऑफ अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड मीन्स his mental status is not okay, he is abnormal, है ना. Any of the partners, not all, any of the partners is found unsound mind, means abnormal mind, तो उसके जो अदर पार्टनर्स हैं वो डिसोल्यूशन के लिए जा सकते हैं. तो ये ऑर्डर कौन देगा? कोर्ट. सेकेंड है परमानेंट इनकैपेबिलिटी ऑफ अ पार्टनर. इफ एनी पार्टनर बिकम्स परमानेंट इनकैपेबल, लंगड़ा लूला हो गया, कोमा में चला गया, या उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ कर सके, है ना. तो अनसाउंड माइंड का संबंध जो है वो किससे है? मस्तिष्क से है. और इनकैपेबिलिटी का संबंध किससे है? शरीर, यानी फिजिकल इनएबिलिटी. ठीक. तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए. मिसकंडक्ट बाय अ पार्टनर. मिसकंडक्ट मीन्स इफ एनी ऑफ द पार्टनर इज डूइंग एनी एंटी फर्म एक्टिविटी एंड हार्मिंग द functioning of the firm.
So, and what is the result? That firm is suffering a loss. Then court can order to dissolve the firm on the application of any of the partners. नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यदि कोई पार्टनर जानबूझकर, मतलब कि किसी इरादे से, इंटेंशनली, ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब कि उसको अनदेखा कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसके नियमों का पालन नहीं कर रहा है, या फिर क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ बिजनेस through his behavior, then court can order to dissolve the firm on the application of other partners. Transfer of interest. If any of the partner is selling or transferring his interest means share of profit, what he receives. It means he wants to leave the firm and he is engaging or involving some other person, means his heir, अपने वारिस को वो लेकर आ रहा है ना? Then court can order to dissolve the firm in that case. Consistent loss. व्यापार घाटे में चल रहा है, फर्म के पास इतना है ही नहीं कि वो मार्केट की लायबिलिटी को पे कर सके, तो फिर ऐसा थोड़ी होगा हम तो डूबेंगे तो मैं भी ले डूबेंगे, है ना? तो ऐसी स्थिति में जब फर्म डूब रही है, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है प्रॉफिट का फ्यूचर में भी, तो फिर पार्टनर्स एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई अब हम नहीं कर पा रहा, बिज़नेस नहीं संभल रहा, यदि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको कैरी करते रहेंगे तो फिर हम तो लॉस में है, बिज़नेस को भी लॉस हो रहा है, जो पार्टीज एसोसिएट हैं उनको भी लॉस होगा, तो फिर कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। या फिर एनी जस्टिफाइड रीज़न, कोई ऐसा कारण हो जिसके कारण कि कोर्ट को लगता हो कि फर्म को बंद करना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके पहले वाला कौन सा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दो क्वेश्चन आज के इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो यू हैव टू राइट दीज 2 क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। ओके, थैंक यू।